How are you? I hope you all are doing great today. मैं आपकी टीचर मिस रेनू राठी और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जिससे बढ़ेगी हमारी नॉलेज। हम पढ़ेंगे देश दुनिया के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एनिमल किंगडम। मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएचर्स विद देयर नेम्स। हमें बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैच करना है उनके नेम के साथ। इट इज अ मरीन एनिमल जिसके डिस्क शेप है और ये फ्री फ्लोटिंग एनिमल है। दिस इज जेलीफिश, ब्राइटली कलर्ड बीटल, वेरी गुड स्टूडेंट्स। लेडी बर्ड, मरीन एनिमल है विच हैज 5 फ्रीज और आर्म्स, सो दिस इज वेरी गुड स्टूडेंट्स। स्टारफिश, it is a burrowing colony forming squirrel found in North America. This is very good students. Prairie dog, it is a small marine fish in whose family males carry the fertilized egg and not females, so this is seahorse. It is a tree dwelling marsupial which feeds every selective on eucalyptus trees, so this is very good students. Koala bear, it is a bat, very good students. Flying fox, it is a domesticated rodent from South America जिसकी robust body है, small limbs है, large head है, big eyes and short ears, so this is Guinea pig. Just for fun, can you find out all the animals hidden in this picture? ये आपको बच्चों यहाँ पे find out करना है। In the no more, the greedy bear names come from the word grills और grills का मतलब होता है बच्चों streaked with grey hair. Grey squirrels bury nuts all over the place and often forget them growing new trees. This makes them more ecologically friendly than red squirrels which store nuts in the piles on the ground, leaving little possibility of germination. So students, I hope you have understood the chapter pretty well. Now you just have to practice exercise questions and revise it again.